Indian Space Research Organization, ISRO, is poised to make history again as it gears up to launch the European Space Agency's project for onboard autonomy PROBA-3 mission in December 2024. This PSLV-C59 mission is the dedicated commercial mission of New Space India Limited, MSIL, the commercial arm of the Indian Space Research Organization, ISRO. The PROBA-3 mission consists of 2 satellites, the occulter and the chronograph. With a combined weight of approximately 560 kilograms, these satellites are set to be launched in a stacked configuration using ISRO's workhorse launch vehicle, the PSLV. The PSLV-C59 mission will be undertaken from first launch pad located at Satish Dhawan Space Center, SDSC Shar, Sriharikota. This mission marks the 61st flight of the Polar Satellite Launch Vehicle, PSLV, and the 26th mission using the PSLV XL configuration. The PROBA-3 mission, dedicated to the exploration of the Sun's corona, seeks to achieve its objectives through the deployment of 2 satellites in a highly elliptical orbit. PROBA-3's design will enable continuous views of the Sun's corona, which Earth-based observers only witness briefly during solar eclipses. This precise mission relies on millimeter-level accuracy to cast a shadow between the 2 satellites, effectively blocking direct sunlight and providing clear observation of the Sun's outer atmosphere. This mission demands a high-altitude orbit, enabling the satellites to fly in formation for about 6 hours at peak altitude, where the influence of Earth's gravity diminishes, reducing propellant usage and facilitating optimal positioning control. Additionally, the spacecrafts carry instruments such as spectrometer and radiometer to study radiation near Earth and measure total solar irradiance, which is vital for climate science. This momentous event not only showcases the spirit of international collaboration in space exploration, but also highlights the relentless pursuit of knowledge and innovation. Nine, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Liftoff normal. Majestic liftoff of the PSLV-C59 PROBA-3 mission from the Satish Dhawan Space Center. यहाँ PSLV-C59 प्रमोशन यान का सफलतापूर्ण उत्थापन रेंज ऑपरेशन डायरेक्टर ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। यह पूरी तरह सामान्य उत्थापन है और उद्देश्य होता हुआ Before S139 stage, thrusting along with the solid strap-on motors. That's 40 seconds. प्रथम चरण का प्रज्वलन जारी है। यह लगभग 109 सेकेंड्स तक चलेगा। इस दौरान कुल 9000 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करता हुआ प्रथम चरण यान को उद्दिष्ट दिशा की ओर ले जाता हुआ। First stage performance normal. Yeah, 58. The second stage of PSLV has begun its operation. The closed loop guidance having been initiated, hereafter the trajectory steers, implementing necessary corrections to achieve the final insertion point of the spacecraft. Third stage ignited. और यहाँ द्वितीय चरण अपना कार्यकाल सफलतापूर्वक
समाप्त कर यान से पृथक किया जा चुका है। यह पहली बार है जब एक ऑपल्टर और एक कोरोनाग्राफ उपग्रह फॉर्मेशन बनाने जा रहे हैं। यह आगे आने वाले बहु उपग्रह मिशनों में गठन उड़ान का मार्गदर्शन भी कर सकता है। इस फॉर्मेशन में दोनों उपग्रहों के बीच लगभग 144 मीटर की दूरी होगी और इसे मिलीमीटर की सटीकता के साथ 6 घंटे तक के लिए उस फॉर्मेशन में बनाए रखा जा सकता है। इसमें आश्चर्य की बात यह है कि यह फॉर्मेशन ये उपग्रह आपस में सामंजस्य बनाते हुए ऑनबोर्ड कंप्यूटर की मदद से करने वाले हैं, यानी बिना किसी ग्राउंड सपोर्ट की मदद लिए। इस मिशन में अंतरिक्ष स्थिति जागरूकता के तहत आपस में टकराव से बचाने के लिए कार्यवाही निर्मित की गई है। इससे अंतरिक्ष मलबा का खतरा कम होता है। stage performance normal. प्रोबा-3 मिशन में कुल 3 उद्देश्य हैं। कोरोनाग्राफ उपग्रह से किसी भी समय सूर्य की आंतरिक वातावरण का साफ चित्र प्रदान करना, जो कि अब तक सिर्फ सूर्य ग्रहण के समय वैज्ञानिकों का अध्ययन करने के लिए मिल पाता था। इस कार्य के लिए ऑपल्टर उपग्रह में 1.4 मीटर का ऑपल्टर डिस्क लगा हुआ है, जो कि एक अपारदर्शी डिस्क है, जो एक गठन में सूर्य को ढक लेगा और तब कोरोनाग्राफ सूर्य के कोरोना का सटीक चित्रण ले सकेगा। दूसरा उद्देश्य है इसमें डिजिटल एब्सोल्यूट रेडियोमीटर की मदद से सूर्य से उत्सर्जित कुल विकिरण का मापन कर सकना। यह मापन कई मायने में सौर अध्ययन के लिए बहुमूल्य आंकड़े उपलब्ध कराएगा। तीसरा उद्देश्य है 3D एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से पृथ्वी की विकिरण पट्टी से गुजरते हुए इलेक्ट्रॉन फ्लक्स का मापन करना। यह अंतरिक्ष मौसम की जानकारी के लिए उद्देश्य से बनाया गया है। कुछ ही क्षणों में प्रोबा-3 अंतरिक्ष यान को चतुर्थ चरण से पृथक कर दिया जाएगा और इसके साथ ही वह 600 बाई 60,530 किलोमीटर की दीर्घवृत्ताकार कक्षा में स्थापित हो जाएगा। PROBA-3 satellite separated. जी हाँ, हर्ष कापल यहाँ पर आ चुका है। रेंज ऑपरेशन डायरेक्टर ने इसकी पुष्टि की। प्रोबा-3 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित कर दिया गया है। Accomplished. Handing over to mission director. This is mission director. PSLV-C59 has injected PROBA-3 satellite into the desired orbit. PSLV-C59 PROBA-3 mission is fully accomplished. PROBA-3 spacecraft having been injected in its orbit. Congratulations to Team ISRO, and liftoff coincides with T0, which is scheduled at 16:04 hours today with the ignition of PS1 core stage. The 4 ground-lit strap-ons ignite 400 milliseconds later. 25 seconds into the flight, the 2 air-lit strap-ons are also ignited. The rocket would have attained 2.76 kilometers altitude by then. Having completed their respective action times of 69.5 seconds and 67 seconds, the ground-lit and air-lit strap-ons are jettisoned from the ongoing vehicle. The first stage takes the PSLV rocket up to an altitude of 58.25 kilometers and is separated at 109.7 seconds into flight. 200 milliseconds later, the second stage, PS2, a liquid stage based on hypergolic propellant combination of UH-25 and N2O4, begins its operation. The duration of PS2 operation is 152.5 seconds. In the meantime, the PSLV would have ascended from 58.4 kilometers altitude to 165 kilometers altitude. As the dense atmosphere will be crossed during PS2 regime, 2 more important flight events take place. That is the initiation of closed loop guidance and separation of payload fairing. -8 minutes. PS2 separates at 262.4 seconds into flight. Solid propellant based third stage, PS3, ignites 1.2 seconds thereafter. During the 120 seconds of its thrusting, the rocket adds 79 kilometers to its altitude and a significant 2.54 kilometers per second in relative velocity.
Coasting phase for PSLV-C59 mission is expected to last for about 105 seconds. PS3 separates 489.2 seconds into flight and PS4 ignites 10 seconds thereafter. PS4 is a pressure-fed T-minus liquid 7 engine minutes. which will operate for 516 seconds for this present flight.